वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं इशफाक चिश्ती। अभी हम पीपीएससी लेक्चरर पास पेपर और मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो हेडमास्टर के लिए भी यूज़फुल हैं और एसएस के लिए, एजुकेशन एसएस के लिए और लेक्चर एजुकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एजुकेशनल लीडर हैज़, राइट आंसर फॉलोअर। नेक्स्ट है, द एजुकेशनल लीडर सपोर्ट्स द, राइट आंसर चेंज। नेक्स्ट, द एजुकेशनल मैनेजर एडवोकेट्स द स्टेटस क्यू। नेक्स्ट है, द एजुकेशनल लीडर कंसर्न्स विद अंडरलाइंग ऑफ पीपल बिलीफ एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट है, द एजुकेशनल मैनेजर कंसर्न्स विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एक्सरसाइज अथॉरिटी। Next, the process of characterizing and appraising some aspects of an educational process is known as educational evaluation. Next, the practical application of any branch of learning is called praxis. Practical application of any branch of learning is called praxis. Next, which type of evaluation is done for identifying the problems of students? Diagnostic. Which type of evaluation is done during studies? Formative. Next, the monitoring learning process provides feedback to reinforce and correct learning errors in which type of evaluation? Right answer is the formative. Next, a college course designed to give students a supervised practical knowledge of subject previously studied theoretically is called practicum. Next, in critical pedagogy, the role of teacher is problem poser. Next है, in the modified Bloom taxonomy the highest level वो है create. Next है, professional knowledge and expertise is development through reflective practices. Next है, who is concerned with the development of reflective practices? तो सकून ने इसको दिया था, सकून। नेक्स्ट है, the effective of independent variable on dependent variable is studied in experimental research. Who is considered as the founder of functional psychology? Davy. नेक्स्ट, वैसे ये फंक्शनल जो है इसका ताल्लुक जो है वो विलियम जेम्स से भी है, उसकी जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है फंक्शनलिज्म भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये पैवला अपना सॉरी ये है डेवी, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं उनका ताल्लुक है बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट, और ये जो थे जॉन डेवी ये इसके साथी थे विलियम जेम्स के और उनके असरार इस पर भी थे, तो इसलिए ये भी इसी में आते हैं। नेक्स्ट, द टीचर इज़ अपॉइंटेड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, उसको ओटी टीचर कहते थे ओरिएंटल लैंग्वेज के लिए, ओरिएंटल टीचिंग। नेक्स्ट है, या ओरिएंटेड टीचर कहलाता था। नेक्स्ट है, द मिडल पास टीचर वाज अपॉइंटेड एज, ये जेवी इसको कहते थे, जूनियर वर्नाकुलर। नेक्स्ट है, कंट्रोल group is a characteristics of experimental. Next, which hypothesis is tested in the experiment? और research hypothesis होता है, which hypothesis is accepted or rejected in the statistical analysis? null hypothesis। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 22, which type of evaluation determines the students prerequisite skills to begin instruction? वो है placement। measure of students performance again a certain criteria, वो है criterion। reference test in which method criteria are fixed, वो परसेंटेज में। नेक्स्ट है, which is not typically a variable considered when evaluating numerical quality of a test, वो है personality। which is not typically a variable considered when evaluating the technical quality of personality. The test having clear and unambiguous scoring criteria is known as objective test. Which type of test typically
comprises two columns to a matching type item, which test requires the students to match a series of responses with the correspondence item in stimulus list. तो वो है matching items. A list of three or more choices from which the exam is required to choose वो है multiple choice item. Intelligence level of gifted student तो वो 140 or and above. The mirror of the society is school. Next, when the line of authority from the most senior executive flows to each succeeding lower level position, this is called chain of command. Chain of command. When the line of authority from the most senior executive flows to each succeeding lower upper level position, this is called chain of command. Next है scholar principal. Chain of command is the principle of organizing. Scholar principal chain of command is the principle of organizing. Next है General Certificate of Secondary Education in England is O level. जो वहाँ पे इंग्लैंड में ओ लेवल इक्वल टू जो है वो मैट्रिक है और ए लेवल जो है वो इंटरमीडिएट के बराबर है. नेक्स्ट, in which country Communist Party guides all educational programs of Ministry of Education? China. Next है explanatory methods are used in subject centered curriculum. Teacher training is less emphasized subject centered, which curriculum is based on thinking of John Dewey to activity centered. Next है cognitive process and emotion beliefs about cause of and success in failure, and failure is intrinsic motivation. Next है highest literacy rate among the SAARC country, तो मालदीव्स का highest है. The term used to describe the way a learning experience is conducted, teaching style, which is based on learner's strengths, weaknesses and preferences about learning to a learning style. A large, highly visible page of paper that reveals point by point the major issues of the presentation is called flip chart. क्या कहलाता है flip chart? A large, highly visible page of paper that reveals point by point the major issues of the presentation through a flip chart. Next, material distributed to the audience is called handouts. Next है the most common way of presenting computer generated graphics is by means of transparencies. Next है 44 charts, maps and drawings that are copied on sheet of acetate are called transparencies. Visual aids should be used to add new information. Next है a small reaction of an electric vehicle would be an example of a model. What is foundation out of which comes the objective of education? Philosophy. In stating the purpose of education, pragmatists would probably stress the need for experience in the democratic social process. There is no official curriculum in right answer USA. USA के अंदर official curriculum हिसाब नहीं है. There is no official curriculum in USA. बेशक इसको लिख लीजिए, important है. There is no official curriculum in USA. The minimum size of sample in experimental research for 15
which was the national curriculum in United Kingdom introduced 1989, which was national curriculum in United Kingdom introduced when was, तो ये है 1989. Next है regular attendance and school record of achievement is criteria for award of diploma in US. में सिर्फ रेगुलर क्लासेस होती हैं, डिप्लोमा दिया जाता है और कुछ भी नहीं, पेपर वगैरह कुछ नहीं होते. Which country has no grade system? Child move through the system on the basis of age. तो यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम, इनमें कोई ग्रेडिंग नहीं दी जाती, एज के लिहाज से बच्चा आगे इम्प्रूव होता है. In which country the principal or school teacher determine whether a student should graduate on basis of his performance? तो कनाडा में. In which country the principal or school teacher determine whether a student should graduate on basis of his performance? Canada. Next है the minimum sample size and descriptive to 20% of population. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 57. Which technique is carried out to detect weaknesses of research tool to a pilot testing? The arithmetic average of score is called mean. Next है what is the midpoint of score called? Median. Score that is attained by more subject than any other, वो है mode. Motivating the teacher in school in concerned with the management function of directing. We support the theory of experience in education. John Dewey. Who supported the theory of experience? तो जॉन डेवी कहता है कि लर्निंग टू डू बाय डूइंग. नेक्स्ट है हाइपोथेसिस इज डेवलप्ड इन, राइट आंसर इज प्रोजेक्ट मेथड. इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज वाज एम्फसाइज्ड. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मुस्लिम एजुकेशन 1977 के अंदर था. पहली कॉन्फ्रेंस में जो है इस्लामी तालीम पर जोर दिया गया. नेक्स्ट है द बुक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन रिटन बाय ब्रूनर. G.S. Brunner. Please write down. Very important है the process of education book has been written by Brunner. The process of education book written by J.S. Brunner. Next है the expected immediate result of an action or activity is called object, जो है वो फ़ौरन हासिल होते हैं. नेक्स्ट है the purpose of classroom formative assessment is to improve the learning. Next है 68. Students can recall, understand and apply the learning concept in cognitive objective. Faith in Allah is an objective which concerns with effective objective. Next है psychomotor objectives are measured through. तो ये काम करने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें कुछ करके दिखाना होता है. तो ये है ऑब्जर्वेशन. विच इज़ द अप्रोप्रिएट एंड इमीडिएट टेक्निक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस. तो वो है माइक्रो टीचिंग. नेक्स्ट है द स्टूडेंट इज ऑफ एवरेज लेवल इज़ अ स्टेटमेंट कंसर्न विद एवेलुएशन. द एग्जामिनर हैज़ पर्सनल ओपिनियन ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ ऐसे टाइप. ऐसे टाइप में वो अपनी मर्जी से नंबर देता है, जैसे चाहता है चेक करता है. विच इज़ द सोर्स ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स. तो वह एवेलुएशन एंड मेजरमेंट है. नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स कैन बी अचीव्ड थ्रू एनेक्डोटल रिकॉर्ड. ये बच्चों के बिहेवियर के बारे में होता है जो कलेक्शन की जाती है. ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है अबाउट स्टूडेंट. It is used to assess interest, attitude, skills and personal qualities through checklist. It is used to assess interest, attitude, skills, personal qualities through checklist. All crows are black. A statement of inductive reasoning. If a student is breaking and combining the information or concept for logical conclusion, he is performing the process of synthesis. It is tangible product that result from program activities output.
नेक्स्ट है 80 द फाउंडर ऑफ कंसेप्ट ऑफ आई क्विज टर्न। नेक्स्ट अपना यहाँ से जनरल नॉलेज स्टार्ट होता है। 81 हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 1945। तो है लॉर्ड वीवल ने इसको पेश किया था शिमला पर। लॉर्ड वीवल हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945 1945। वो है लॉर्ड वीवल। नेक्स्ट है द विटामिन विच कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी इज। विटामिन डी है, आसानी से जज़ब होता है और सूर्य की शाहों से मिल जाता है। विच इज़ नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। राइट आंसर माइक्रोकॉन्ड्रिया स्प्लीन। राइट आंसर है स्प्लीन। नेक्स्ट है वेयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट ऑल द ईयर। तो है नैरोबी। राइट आंसर इज नैरोबी। जहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं वो कहाँ पे है, नैरोबी में। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज ऑफ लीवर। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड। नेक्स्ट है बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम केम इन। ये 1959 मई 1959। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम केम इन मई 1959 मई 1959। नेक्स्ट है कंट्री विच द इक्वेटर पासिस इज। तो इंडोनेशिया से गुजरता है ख़त इस्तवा। नेक्स्ट है साइबर क्राइम इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्यूसेक इज़ द यूनिट ऑफ ये वाटर फ्लो पानी की पैमाइश के लिए कि पानी दरियाओं में कितने क्यूसेक है या समुद्रों में, तो ये चेक करने के लिए। सिनोनिम ऑफ इंसिसेंट्स तो है कंटिन्यूस। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर एमएस वर्ड इज कैलिबरी। नेक्स्ट है विच गिव द एंटोनिम ऑफ एब्सर्ड। तो है रैशनल। एब्सर्ड का उल्ट बताना है। एब्सर्ड कहते हैं बेवकूफ़ को, तो रैशनल अकली। नेक्स्ट ये मैथ के क्वेश्चन, इनको सॉल्व आउट करना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है हु वाज कॉल्ड अबू अल बशर सानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है मुन्नू भाई एक मशहूर कॉलम निगार मुसन्निफ़ और शायर। इनका असल नाम क्या, मुनीर अहमद कुरैशी है। आगे ये शेर किसका है, तो कौन सा शेर किसका, ये देखते हैं। ये है कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मोहम्मद अली जौहर साहब ने लिखा था। नेक्स्ट है इब्ने इंशा की वजह शोहरत क्या है, तो वह सफ़रनामा। फ़ारसी में लिखी है ये मशहूर किताब तुज़ के बाबरी का ताल्लुक़ अदब की किस सनफ़ से है, तो ये आप बीती है। तो ये था आज का मॉडल पेपर। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।